Next week again we are starting the therapy. The training itself. Probably the same time. Because I don't like to I want to get enroll each and every person to whom I am speaking. I don't want to bounce back. Very true, very true. That is more important. Yeah. Yeah, that is what I was talking to Dr. Sona, my mother's live case. Yeah. For multiple cysts. So that's what, like, as you told your mother's case. So I'm just gathering information from you for like few more cases so that I can impress the new candidates who are joining. Yeah, yeah. Like my other patient, whom I have given only the fitness pillars. She's not taken any supplements, you know. Acha. And she started with a homeopathy also. She's finding it better. Okay, okay. She's Nice. just given me the input. What was the ailment? The ailment was she had a bulgy this uterus. Acha. And then face, periods off and on. Okay, and then ovarian cyst. Acha. Okay. Ovarian cyst of 3.8 into 2.8 centimeters. Acha. Yeah. So what we have given her, like only fitness pillar. Yes. Acha. And for ovarian cyst, if if you want to give this medicines, so nutraceuticals, what we can give? See, if in case it's an ovarian cyst, first and the foremost, we need to be putting that patient on the diet. Our entire parameters, what we have discussed, no, the fitness pillar, that is very important. In that, the enema plays an important. The power steam plays an important role. Along with because the enema is to be given for entire 1 month. Acha. Yeah, and CMD? CMD Also, yeah, CMD though is a compulsory. CMD and Tulsi Punch is compulsory for everyone. CMD and Tulsi Punch. Acha. Panch Tulsi. Okay. Yeah. So then I gave a kidney care because it is going to remove the toxins because ovarian is over there. So along with the kidney care, I gave a liver care so that nothing gets stuck in the liver also because pancreas plays an important role over there. Okay, then along with that, I have given a BioSpringer, which I'm going to speak about today. One supplement or two supplements which are left. So BioSpringer, I'm going to be just talking on the last part after 24 days. So BioSpringer, the Moringa, what is there, that plays a crucial role. Okay. Because it gives vitamin A, B, C, D, E. Plus it gives you zinc, calcium, magnesium, and the folic acid. Okay. So that plays a very crucial role, you know. In naturopath also, when we ask people to take Moringa SAV. So Moringa is drumstick not in Indian. Drumstick ke flowers. Drumstick flowers are known as Moringa, no? Acha. Okay. Yeah, so that is there in our BioSpringer. Because and जो आपको जो अभी जैसे समझो आप पालक लेते हो, ठीक है? पालक में टॉक्सिन्स भी होंगे, जो अभी जैसे बारिश है, टॉक्सिन्स भी होंगे, ऑटोमेटिकली उससे और आपका मेटल लेवल बढ़ेगा. तो मोरिंगा में उसमें जो पालक का है कंटेंट, इट इज 30 टाइम्स मोर. सेकेंड थिंग, इट इज सेफ. कैप्सूल फॉर्म में बनी हुई है तो आपको मेटल तो और आने के वो नहीं होंगे ना, राइट? That becomes an added advantage. So with ovarian cyst, then BioSpringer would also go with it. Depend on our ovarian cyst size. Then Calmac D will be given so that her absorption of the calcium becomes easier with vitamin D. Though we will ask her to do sun bath. But sun bath के साथ we will still give her Calmac D. Because वो strengthen करेगा ना bones को. And like to know how we are like with the competitors regarding the pricing, like Amway or Herbalife or. Yeah, I don't want to get into all that. You know, I don't want to get into that. Because their products are different. They are into an MLM पूरा formation. हमारा MLM formation नहीं है. We don't believe in all that. If a patient is wanting to get treated economically via fitness pillar, he is welcome. If in case a
patient is wanting to get via supplement, he is welcome. Okay. So Okay. we don't push you all to sell the products. No. Mm-hmm. We don't want to Mm-hmm. promote. We don't want to promote our products. We don't want to promote our supplements. Mm-hmm. So So, we are not Good here. morning, everybody. Good Hi, morning. Sona ma'am. Good morning. Good good morning, morning. everybody. Manisha Good madam, morning. Narendra, Good Neelam morning. madam. Good Good morning, morning. everyone. Good morning. Good morning. Okay. So that is one of the reason we don't want to do the propaganda over there. Mm-hmm. So no Okay. comparison with any of the products. No comparison with any of the things. Simple. Great. Because we have tested. That is what the reason of Kohar Health LLP stands for. Kohar Mm-hmm. Health LLP does the research work. They Correct. do the testing, they have checked the product, they have checked the viability, they have done everything. And why should I doubt a question mark over there? Mm-hmm. No. If some CP, there are a lot of people who are already involved in this MLM. Whatever, that is their problem, So, sir. That is अभी जैसे मैंने आपको बोला, अभी समझो अभी जैसे हमने AP भी डाला है, APAMAR, okay? uh-huh. It is not of an MFA. Mm-hmm. MFA का नहीं है, Tulsi Punch is not of an MFA. Because we are doing testing, we are doing the Kohar Health LLP का काम ही वो रिसर्च करना है जो हमारे पेशेंट को क्योर करने को परमानेंट हेल्प करेगा. And that is where this supplement we are prescribing. What is this? AP, what you told? That is APAM, that are all immunity booster. Acha. Yeah. So that is where we don't, we don't, even somebody asked me, Narendra also asked me, are you working in the form of an MLM? I told him, no, we don't. We don't. आपके पेशेंट को अगर क्रिटिकल है उसको आप सजेस्ट करोगे, कॉल उसका है. अगर उसको करना है वो करेगा ही. अगर उसको नहीं करना, जैसे मैंने अभी आपको बल्जी यूट्रस का मेरा पेशेंट का केस बताया, उसने मेरे को बोला मेरे को फिटनेस पिलर के सिवा कुछ नहीं करना है. इट्स ओके. टाइम बाउंड विल गो हाई, इट विल बी डबल. करेक्ट. जहाँ पे आप 1 to 3 months बोलोगे वहां पे आप 3 to 6 months बोलोगे. सिंपल. आप उनको दोनों चीजें कंपेयर करके बोलोगे. You're not going to be sticking on one thing. Yeah. Okay? Yeah. Thanks. Yeah, thanks. So let's start. Sona ma'am, is anybody else likely to join from your team more? Yes, madam. One or two are there is a difficulty for them to connect in, so I was just I'll guiding just them. hold on. No, I'll just hold Just on. for a minute, we can wait and then we can start by. Yeah. Done. क्लाउडी वेदर की वजह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है ना, इसीलिए. Yes. Today sunbathing was difficult, ne? Yeah. Yes. Everywhere cloudy. Yes. It has rained yesterday, na? Yeah. Can I ask one question? Yes, Umesh, you can. Yeah, so like see, if we take raw vegetables or like salads, correct? Yeah. Continually. So Yes. is there any chance of like you can say indigestion or like No, why? Because in salad and this, anyway, you are washing your vegetables either with bio wash, which is a product, or otherwise with sendha namak in 1 liter of water. Okay, you are soaking and keeping it, so pesticide comes out. Once your pesticide is out, and when you eat the salad, you need to put 2 to 3 drops of CMD. Acha. Okay. So that the digestion problem is not there. And Because plus, you are some taking fruits.
Plus you are taking fruits also, na? It is not only Because some salad. people has got intolerance of like 1 or 2 days they can tolerate, but like after third or fourth day they start having belching or something like that, No, no, bloating or. it is not that way. It is the liking. That is the main thing. You know, it is not Hmm. that. They don't Hmm. like. Problem ये होता है. Hmm. अभी जैसे मैं आपको मॉम का ही कंडीशन बता रही थी ना, अभी मॉम Hmm. इतने सालों से 3 प्रॉपर मील्स खाई है. सलाद Hmm. कभी खाया तो शाम को फ्रूट्स और सलाद खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाने का. फ्रूट्स भी ईट एवरी डे. ओके, Hmm. सलाद शी Hmm. नेवर टेकन. तो अभी उसको Hmm. वो डिफिकल्टी होती है. तो देन शी इज टू गिव मी एक्सक्यूज, ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है. आई टोल्ड हर ठीक है, चलेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डू इट. Hmm. और डू यू Yeah. वांट अ सर्जरी? वेरी क्लियर कट. Hmm. Correct. So she said, no, I don't want a surgery. Memla, do you want this thing to come again to you? Because अभी Hmm. जैसे किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन अब आप एक बार निकालते हो तो 10% वो फिर से आते हैं. Hmm. So cyst is what? Cyst is also the same form. It comes again. Hmm. It doesn't goes away permanently अगर आप एक बार निकालते हो. Hmm. I had cyst. I got treated via homeopathy and naturopathy. Okay. That time so I was not part of cohort therapy at all. Hmm. Because cyst is a common in every lady, Yeah. Yeah. especially in ovarian cyst. Hmm. जैसे kidney stones are common in every third or fourth person having a kidney stone today. Hmm. Gallbladder stones को पूरा gallbladder निकाल के फेंक देते हैं. But when you can treat them naturally, why not? Hmm. You should be encouraging patient to you go for it naturally. See, it is up to the thought process of getting treated naturally. That is the main important. Hmm. The key is that if you have a desire to treat yourself naturally with the nature what we are blessed with, you can heal any of the diseases. Hmm. इसके लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, फर्स्ट डे हमको खाली पानी पे डालते हैं, आईवी पे डालते हैं, क्यों करते हैं? Hmm. Have you ever thought about? Sorry to interrupt Let's in start. between, but everybody is not being able to connect. So we will hold on for 1-2 minutes. Doesn't matter. We will extend till 11:55 because today I want them to know the ways of earning. That is Because more. they all are trying very hard. So I Not think a as one, not a one. Supriya madam said, There's a network problem. Yes. correct. So they are just trying There to. is. I'll just disconnect this. I'll just disconnect Yeah, and yeah, I'll just yeah. give them a call and just help them. Yeah. Sure, Thank ma'am. you so much. Yeah, thank you so much. So it is your thought process, you know. अगर आपको अच्छे से जीने की इरादा है, you know, you want to be a medicine free, you don't want to suffer. That is where then you will go with nature. You will accept the nature. अभी कितने जन fruits और सलाद में, many of them now I am seeing it, people are becoming more cautious to have more of fruits and salad. Yeah. And less of roti, but take more of vegetable. Hmm. Why? Because they are seeing it the conditions. पहले वाले उनको बोल के बुजुर्ग, हम लोग बुजुर्ग करके बोलते हैं, हमारे माता पिता या हमारे दादी दादा बोल के हमको थक गए. Good morning, Mr. Neelam, could you join it? Gayatri madam, good morning. Gayatri madam, Not there. Galaxy J7 Max कौन है? गायत्री मैडम का ही है. Ma'am, it's me. Okay. So can I change your name, Neelam? Ma'am, it's me, Nishtha. Nista. Okay. I will change. You know, it's showing it as Galaxy, तो अच्छा नहीं लगता है. Ma'am, can you make me the co-host so Yes. that I can share this link to them? Yes, ma'am, I'm doing it right now. Nista has joined and Neelam has joined. Ma'am, my spelling is NISHTHA. NISHTHA. THA. Okay, I'll just do it right now. THA. Thank you. Thank you, ma'am.
Thank you. Yeah. So, but हमने कभी उमेश Good सर वो morning, माना Nishtha. Good morning, ma'am. Neelam has also joined in. So let us wait one more minute for Yeah, somebody. Farah, Shekha, they are just trying in to log. Yeah. Let them join in. Don't no worries. Yeah. Meenal So ma'am, any protocol we have decided for this corona, like for to increase the immunity in that way? see, increasing the immunity on that day I was talking to, you should be having in a lukewarm water. See, CMD acts as a alkaline, as a mineralize in your body immediately when you take it. It is more helpful when you take it with a lukewarm water than a normal water. Mm-hmm. Okay. To increase the immunity, you should be taking CMD water every day. Okay. 200 ml maybe. Initially start with 1 drop. 200 ml may second day go with 2 drops. But don't take it every now and then, because as you're just a healthy person, you just want to Mm-hmm. protect yourself, you just want to support your body. Just take 1 drop in 200 ml glass. 1 glass is Okay. sufficient. Next day with Okay. 2 drops, third day with 3 drops. Go till 21 days. Mm-hmm. Wherever you find a trigger, just stop it and take the same drop ahead. Mm-hmm. But otherwise, till 4 drops for a healthy person is okay. Like Pradeep sir takes 4 drops every day. For me, Okay. even in 1.5 liter, 1 drop is sufficient because of my, Acha. yes. So it is up to, I'll add to this, Meenal madam. CMD, yes, जैसे कि yes. मुझे कभी-कभी if there's irritation of the throat or something, I even add 7 drops. To combat the situation, you can increase if your body can take it. CMD is a really a magical thing for anything. I was suffering from Acha. Oh, vertigo. for gargling purpose also we can use, na? CMD. Sorry. For gargling purpose, mouth You don't gargling. have to gargle with it. You can just drink it. Ingestion is much beneficial. Okay. Okay. Ingestion, if you can take it, why do you need to gargle? It's not a mouth freshener, or it's not this thing. It doesn't have any anti septic properties in it. Mm-hmm. तो आप Okay. इसको पी लेंगे ना, that is much better. And to combat any disease state, गर्म पानी में best रहता है. Mm-hmm. Regular basis I drink, but when I'm feeling, जैसे कि अभी हम morning में कोरोना का time में बाहर से घूम के आते हैं, so I make it a point कि हमारा first thing is drinking it in hot water. So depending, I can take it till 7 drops. I can take more, but the taste is not. I mean, palatability poor हो जाती है. That's the reason That is I a will reason. take- That is हाँ, the reason many people says कि हमको है ना हाँ, dryness लगता है. हाँ, तो हम recommend इसके लिए करते हैं कि if you are healthy, take 1 to 2 drops in 200 ml is sufficient. and you can repeat it throughout the day. Mm-hmm. Okay. If you want to. Otherwise, once you have it in the morning, it's sufficient. So only CMD is prescribed for Yeah, PSCMD and Tulsi Punch is prescribed to all the patients. Ma'am, we Acha. can start because We can start. Yeah. we can start. They'll join No, in as because and how. Connectivity because I poor was है उनका waiting. काफी. Oh, okay. Because I was waiting even for Rani No. to join, because Rani भी काफी time से है ना, इसके लिए. हाँ नहीं. Did you ping her? आप उनको message डाल देते मैं थे. group में भी डाल देती हूँ. 1 second. I'll just put हाँ, it in because a good morning Shikha, glad to see you here today. Good morning, ma'am. Good morning. 1 second. I'll just put in a message in the group itself. I put in a message, okay? So now let's come to the earning thing which we discussed about yesterday. Okay, I'll just share the screen with you all. See, for us, the main is your distributor file, where you go through it, each and everything you will understand. That is more important for us.
as it's like a, a reference for us, as if it's like to be known as a Bible for us, for curing any patient, because it contains everything, even the combination. See over here, if you check now, if in case a person has a diabetic too, he's on medication, which we discussed on that day, the blood group A, Om Prakash. See, CMD is there in every parameter. Can you see that? In every disease, there's a CMD which has been specified. Then now comes with diabetic 2 type medication का, जो मैंने उनको बोला हम किडनी केयर देंगे, हम उसको डाई केयर देंगे, हम उसको इनिमा किट, इनिमा हम बोलेंगे देने के लिए. अगर वो इनिमा लेने के लिए वो हो रहा है तो डिटॉक्स इज ऑल्सो देयर. To protect his heart, we are giving him heart care also. Then if in case this he goes with a basic, अगर वो बोलता है मेरे को मीडियम में भी जाना है, then we will take even liver care. अगर वो मेरे को बोलता है प्रीमियम में जाना है तो we will also take Biospringa. And the duration is written clear cut, 1 month. Along with this, we will treat a patient with fitness pillar. फिटनेस पिलर में डाई आप इसका ब्लड ग्रुप, आप इसका अल्कलाइन पानी करोगे विद CMD ड्रॉप्स. फिटनेस पिलर में आप इसका कुकर यूज नहीं करना, एल्यूमिनियम का बर्तन यूज नहीं करना, और जितना होता है तांबे का बर्तन में खाना बनाना. इफ इन केस दे डोंट हैव, because of the lockdown they can't do anything, they might be having steel vessels, but otherwise steel vessel is also no. but नहीं है तो स्टील के बर्तन में वो डाल सकता है, बना सकता है. Otherwise, we say no. We prefer a copper that is more, or an iron that is more specific, or earthen pot. No usages of non-stick pans. No use of cooker at all. Plus, we recommend kacha ghani ka tel instead of the normal oil. So this fitness pillars he has to inculcate. Now for an example, a person with the same person, I am talking about with a diabetic, he has a kidney stone. Okay, अभी देखो, आप देखोगे किडनी केयर कॉमन है दोनों में. Can you see my screen? Right? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, So kidney care is common in both. Diabetic type 2 में medication में CMD is there, over here also CMD is there. Kidney care over there, over here also. Detox here and there. अभी इसके बगैर कुछ अलग होगा, then we will ask them to take. Otherwise, kidney care, liver care is there. We have anyway taken into consideration. अभी now आप मेरे को पूछोगे ये स्प्रे क्या है? We ask a patient to take 40 ml का स्प्रे बॉटल, empty बॉटल. वो 40 ml में हम 40 ml पहले पानी डालते हैं और 40 ड्रॉप्स CMD डालते हैं. अगर वो पेशेंट 20 ml डालता है पानी तो 20 ड्रॉप्स डालते हैं. अगर वो पेशेंट 10 ml पानी हाँ ये कहा था, बल्कि बढ़िया बात, गांव में निकल गया खेती बाड़ी में. सोना दीदी, सोना प्लीज उसको साइलेंट कर दो ना. ओके, तो यहाँ पे जो हम पेशेंट को बोलते हैं स्प्रे करने के लिए, स्प्रे कैसे करेगा? अगर वो 10 ml का पानी लेता है तो 10 ड्रॉप्स, 20 ml लेगा तो 20 ड्रॉप्स. So how much water is he taking in that spray bottle? He has to only spray, he has to not massage, he has to not do anything. अभी ये स्प्रे कहाँ पे करेगा आप मेरे को बोलोगे? इसका स्टोन कहाँ पे है? किडनी में है, तो किडनी के वहां पे वो स्प्रे करेगा. जैसे डायबिटिक है तो डायबिटिक कहाँ पे होती है? लीवर एंड किडनीज को, पैनक्रियाज जो होती है वहीं पे वो इफेक्टेड एरिया होती है ना. तो आप पूरा एब्डोमेन में जैसे स्प्रे करते हैं ना वैसे करेंगे. अगर किसी को स्वेलिंग है लेग्स में या वेरिको वेन्स है, इवन इफ दे स्प्रे ओवर हियर इन दी feet where they have the varicose veins, it gives them a relief. किसी को एंकल पेन है, किसी को नी में पेन है, we just ask them to spray there. किसी को rashes है, we ask them to spray there. So could you understand now? Over here, 2 diseases I have taken together. Madam, Yes.
वो स्प्रे का पानी बनाएंगे तो उसी टाइम खत्म करने का या रख सकते हैं? नहीं, आप रख सकते हो, बिकॉज वो 2-3 बार एटलीस्ट 3-4 घंटे आप रख सकते हो, क्योंकि CMD का इफेक्ट 3-4 आवर्स रहता है। ओके, बिकॉज आप पूरा 40 ml पानी तो खत्म नहीं करोगे ना तभी। हाँ इसीलिए पूछा हमने। हाँ, इसके लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, छोटा छोटा बॉटल बनाओ ना 10-10 ml का। ओके ओके। If you think I don't want to make it, अभी जैसे for my mom, I spray her every day on her feet, on her legs, and on her stomach. So what I need 20 ml. So I make 20 ml with 20 CMD drops. और जैसे ही वो 2 बार ड्राई होता है, I put her twice. That's it. I leave her. But you're not supposed to massage. Huh? You're just supposed to only spread it. So now could you understand how do you map it? Combinations आप कैसे करते हैं? अगर कोई Ma'am, पेशेंट, हाँ what बोलो। is CMD 60 and CMD 120? अच्छा, CMD 60 we get CMD in 60 ml bottle, 120 ml bottle, 240 ml bottle. अच्छा अच्छा। अभी जैसे डायबिटिक का पेशेंट का ट्रीटमेंट है, वो 1 मंथ तो जाएगा ही जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो इनिशियली उसका डायबिटिक के बेस पे हम उसको बोलेंगे CMD ड्रॉप्स आप इतना चालू करो। बट जहाँ पे किडनी स्टोन के लिए 20-60 ml भी काफी होता है, बट डिपेंडिंग अगर उसका स्टोन बड़ा है तो वी मे रिकमेंड हर टू टेक 120 ml का ऑल्सो। ओके ओके। Yeah, so it is just the size of the bottle, because depending on the size of the stone, the condition will be treated. If in case a person says I want only basic combination, then you're not supposed to be seeing the medium and premium package for them. Means आप उसको बेसिक आप हेल्थ केयर, इसका हार्ट केयर तक दोगे, उसको लीवर केयर नहीं दोगे, उसको बायोस्प्रिंगा नहीं दोगे। अगर वही पेशेंट मुझे बोलता है मेरे को मीडियम लेना है, तो आई विल इंक्लूड लीवर केयर। अगर वही पेशेंट मुझे बोलता है मैं प्रीमियम पैकेज लूंगा, बायोस्प्रिंगा भी लूंगा, so that will include बायोस्प्रिंगा also. So you have to ask the patient, does he wants a basic treatment, medium treatment or a premium combination. जैसे हम उसको पूछेंगे ना कि खाली आपको फिटनेस पिलर में ही ट्रीट करना है कि नहीं, तो वैसे सप्लीमेंट्स में भी हमने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। That's what I told you. We don't believe in MLM. We give supplements if the patient desires to. But yes, for critical patient, we ask them to do it. उसके बेसिस में आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ है इधर। देखो साइज के ऊपर भी, अभी जैसे 10 mm का साइज है, 1 मंथ हमने लिखा है, तो आपका CMD क्या डाला है हमने? 120 डाला है ना। इट इज द साइज ऑफ द बॉटल, बिकॉज उसको स्प्रे में भी लगेगा, उसको इनटेक के लिए भी लगेगा। Okay. See here the combination is also written. What and how it is helpful. CMD is compulsory for all. Tulsi Punch is compulsory for all. Baki honey, which I told you all about, it is from the Madhuban. It is from the Calcutta Madhuban. तो ये स्पेसिफिक टाइप की हनी है जो डाइजेशन प्रॉब्लम में, इम्यूनिटी प्रॉब्लम में, ब्रेन फंक्शन में, स्किन प्रॉब्लम में, सो इट इज एन इम्यूनिटी फॉर ओवरऑल एज अ बूस्टर। आई वांट टू नेम एनी ब्रांड राइट नाउ, कोई भी ब्रांड का आप हनी लेके धूप में रखो तो आपको शुगर क्रिस्टल नीचे दिखेंगे। और आप ये भी हनी रख के देखो, so see over here, so skin problem, cold and cough, weight gain, weight loss, so it is an overall combination. अगर कोई हेल्दी बंदा भी ये हनी लेगा ना, it will help him. So now come see, it's high fiber. High fiber क्या करता है? आप high fiber का पपाया लेते हो, bananas लेते हो, it cleans the system. It is cleaning and improving your intestinal health. तो अगर आपका इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा, छोटा या बड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन,
ऑटोमेटिकली आपकी एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी कम होगी तो आपकी हेल्थ जो डिटोरिएट हो रही है वो होना कम बंद करेगी। मतलब जो बीपी प्रॉब्लम, जो शुगर प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे ना। अभी जैसे प्रोटीन में भी है, प्रोटीन में वी हैव गॉट प्रोटीन फॉर मेन, प्रोटीन फॉर वुमेन, प्रोटीन फॉर किड्स। आप बोलोगे 3 फ्लेवर्स के क्यों? बिकॉज ईच पर्सन हॉर्मोन्स आर डिफरेंट, each age hormones are different, because hormonal imbalance for ladies starts occurring after the age of 40. For female it is after the age of 40, but for male it is after the age of 50. So how can I give the same product? How can I give the same supplement? So including the brain. अभी आप पूछोगे बच्चों को आप अलग क्यों दे रहे हो? Why? Because of which when the child is small, automatically what we have to do, we have to improve their nervous function, their brain function, जो हम brain gym exercise बोलते हैं। brain gym exercise क्या करता है? It boosts the child's brain, nervous system, balances in the body, it balances overall of a child. मतलब जो उसमें एंजाइटी होगी वो कम होगी, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग, जो ऑक्सीजन लेवल उसके ब्रेन को जानी चाहिए वो मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव होगा। हाइपर बच्चा कम होते जाएगा। सो इट्स प्रोटीन किड्स क्या करता है? बूस्ट अप्स ब्रेन, इंप्रूविंग नर्वस सिस्टम, इंक्रीजिंग मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन इन किड्स। आपने देखा अभी तीनों की जो ये है क्षमता है, इट्स अ डिफरेंट। वुमेन्स के लिए हार्मोनल चेंजेस के लिए है, ब्रेन्स के लिए, बच्चों के लिए है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए है। बट जहाँ पे मेन के लिए आते हैं, इट इज फॉर प्रोटीन डेफिशिएंसी, वेट गेन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल गेन, हार्ट, बोन, स्ट्रेस, chronological illness and the low immunity. So each function is varying it. That's the reason we have suggested men के लिए अलग, women के लिए अलग, kids के लिए अलग। अभी जैसे किडनी केयर है, किडनी केयर क्या करता है? क्लीनिंग ऑफ किडनी, जो कल हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट का, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस। हार्ट केयर क्या, लीवो केयर क्या करता है? लीवो केयर हेल्प फॉर हार्ट, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। We discussed when we discussed about these products. So this is an overall gist of the products. If in case a person having the eye may infection can just spray the CMD with water. Your voice is low. Hello. Yeah. अभी जैसे if in case on that day, you know, I was going blank in my eyes. So what I did, I just sprayed a CMD drops along with the water. I just sprayed it. But beware, no lenses. Please mention Yeah, no this, Meenal lenses. madam. Yeah, no lenses, huh? There should be no lenses inside. I sprayed For it. what? Why? For what? No lenses? When you spray the CMD drops in your eyes. Acha. For what it is sprayed in eyes? I spread it because I was reading continuously. I was on the laptop and I was on the mobile. So I was going blank. And immediately Acha. I sprayed it. It is also spread to get rid of your spectacles. अगर आपका glasses है, it is benefited. Even at the initial stage of cataract, it is advised. Okay. Mm-hmm. So each product has its own beauty, and CMD is overall a combination for everything. So here even we have mentioned your entire blood group. So this is practically a file for you, which you should be referring for each and every patient in the initial phase. Second thing, this is what my strong advice is. You should start with counseling and consulting first, because then you will understand the baseline of treating a patient and you will know how it is to be cured. So we have everyday session 2 to 3 where we discuss
discuss on patient, where we even discuss how to generate lead. If somebody raises a question, we do answer that also. So, but 2 to 3 is for cases only for the patients. But yes, somewhere something has been asked, we answer that. It is not that we don't, we answer. वो ग्रुप में आप मेरे को बोलोगे कि वहां पे हमको लीड जनरेशन के लिए कैसे करना है, वी विल शो यू हाउ इट इज टू बी डन. अगर आप अभी समझो 24 वेज ऑफ लर्निंग सीख रहे हो, आपको कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, तो वो फोरम में भी आप ओपन फोरम में डिस्कस कर सकते हो, 2 से 3 के फोरम में, बट नॉट इन 12 to 1. 12 to 1, it is only an introduction on cohort therapy. 12 to 1 जो भी हमारे थेरेपिस्ट बनते हैं, हम उनको बोलते हैं आप ज्वाइन करो, आप समझो वो थेरेपी क्या बोलना चाहती है, बिकॉज इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन व्हाट कोहर इज, how it helps the patient to be treated and the ways of earning. But ways of earning वहां पे limited हम बताते हैं. Though we share everything, but we don't discuss in depth. That is the difference. If in case somebody is very good a speaker, knows every type of disease, how it is to be treated, knows how to connect with the line of treatment, then you can become a trainer too. You should be able to answer any queries coming from the crowd. You should not go blank that time. But for training, train the trainer, then we train you, we give you somebody who will be your host or co-host. Like now, Dr. Supriya is going to be taking up 10 days free training, where though I will be the host, but main training will be taken by her. Wherever she will be stuck, wherever I feel she's going out of the way, I'll be answering that questions. And preferably that training we will start on 4th. 2nd, this training is getting over. So 4th will be that training. And it will be at the same time, 10:40 to 11:40. So if in case आपको किसी को लगता है कि मेरा बंदा ज्वाइन होने चाहिए, you feel you want to introduce somebody, you can introduce them from the very first day, so that they don't miss out on an entire training part of it. They know what it is going around. Okay, so here we have spoken on the entire blood group. We have spoken about the fitness pillars. So this becomes your whole of the file for learning, for understanding, for treating your patients. Here comes your ways of earning. We spoke yesterday till corporate presentation. Any question till corporate presentation? Any questions? किसी को कोई question है till corporate presentation? कोई भी participant मुझे हाँ या ना में जवाब दे देवे. Anybody? Hello. Yes, Narendra. अच्छा, can you tell me corporation के साथ presentation के साथ साथ can we alternately do residential societies में presentations and Yes, yes, yes. We have got even that. Yes, we can do it. Okay. Why not? जो हमारा awareness campaigns होती है, you can do that in your societies. Okay. You can do. We will be standing with you. Okay. जैसे समझो अभी आपका company है, for an example. You have a company. You want to create an awareness. We can do that. Okay. Yes, we can. Because वहां से जो supplements होगी, वहां से जो हो सकता है कोई earning के लिए आवे, they all will be routed through you. They all will be under you. Okay. Yeah. That is one of the beauty of it, no? Because we take you into the consideration. Okay. Yeah. It is not that we will not take you at all. आपने दे दिया और हमने कर दिया, नहीं.
because you have referred, you are going to be part of it. Company cannot take it ahead with them forever, no? अगर कंपनी सोचेगी, अगर अभी टाटा है, टाटा फॉर एन एग्जांपल, अगर वो अपने मैनेजमेंट को नहीं देगा आगे लेने को, तो वो एम्प्लॉइज कैसे आगे लेंगे? एम्प्लॉइज आगे नहीं लेंगे तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? But obviously. So this is the same philosophy what we believe at. That is the reason we suggest each therapist, though they want to be a trainer or though they want to be something else, but they should know that where they want to grow and how do they want to grow. First, Okay. understanding should be that. Second, Yes, why not? then you should go for a consultation, which includes counseling and consulting. क्योंकि काउंसलिंग कंसल्टिंग में क्या होगा, साथ में हो सकता है आपका पेशेंट रेफरल्स भी आपको कहाँ से मिले, हो सकता है आपको वहीं पे आपको कोई किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करना हो तो वो भी हो सकता है, प्लस वहीं पे आपको हो सकता है कि कोई किसी को ट्रीटमेंट आपकी अच्छी लगी हो वो अपने कंपनी में प्रपोज करे, वहीं से हो सकता है किसी को पेशेंट को आपके घर पे सपोर्ट लगता हो जो प्रोंटो का है, वहीं से वो सोसाइटी से ही हो सकता है कोई एफिलिएटेड पार्टनर आपका बने या कोई पेशेंट ही आपका एफिलिएटेड पार्टनर बने, यू डोंट नो ना. Yes. तो इफ इन केस अगर प्रदीप सर ही सब में जाएंगे या अगर मैं ही जाऊंगी आपके बदले, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर माय आई एम योर सीनियर बॉडी, अगर मैं ही सब करूंगी तो आप क्या करोगे? फर्स्ट, हाउ विल यू ग्रो? बिकॉज आपके जो अंडर टीम बनेगी, अभी समझो ये आपने अपने बिल्डिंग में किया, फॉर एन एग्जांपल, आपके बिल्डिंग में मैं डेली तो नहीं आ सकूंगी, Yes. तो देन यू बिकम अ फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट ना. No, basically we follow the same process what we are doing with BVJ group. Yes. Okay, we Yes. follow the same process. Yes. So we over here also follow the same process, same decorum, same thing. हाँ, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वी क्लैरिफाई. अगर कहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, come and speak to your senior body immediately. Don't take it more ahead to the senior buddies. Okay. It should be clarified कि मीनल मैडम ये हुआ है. अगर समझो मैं आपकी सीनियर बॉडी हूँ यहाँ पे, तो आपको डायरेक्टली मेरे पास आना है, मीनल मैडम ये हुआ है. Okay. So I'll give you the solution for it. Whether what the situation is. See, कभी क्या होता है, अभी जैसे नरेंद्र आपके पास पेशेंट है, ठीक है, and it is very critical. I am very busy with something else or the other. उसके ऊपर सीनियर बॉडी मेरा प्रदीप सर है, ओके. अगर आप उससे कनेक्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि he is going to be doing it everything ना. बट अगर मेरे मन में वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आई शुड सिट एंड क्लैरिफाई. अगर मैं आपके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं करूंगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा, और हमको तो काम तो लाइफ लॉन्ग साथ में करना है. अंडरस्टूड? सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, वी शुड थिंक अबाउट द वेलनेस ऑफ द पेशेंट, नॉट अबाउट आवरसेल्फ ऑल्सो. बिकॉज if you believe in giving back to the society, first comes the society, then comes you. Definitely. So there you have to do justification. There you are responsible for your own deeds. Nobody can take away your destiny. जैसे अभी मैंने कल बोला था कि I don't charge for the counseling. Okay? I don't charge मतलब to whom? To people whom I know, to very close to it. कोई रेफर करता है, जिनको मालूम है उनकी कंडीशंस क्या है, कैसी है. अभी जैसे उस दिन मेरे को कोई करियर काउंसलिंग के लिए कॉल किया. It was not through anybody. I asked her, how have you come? So she told me कि मीनल मैडम आप चेस केस में पैनल पे हो as a counselor. I told her yes. So she has come through that. So then I told her my charges. अगर समझो आपका कोई पेशेंट है, आपको मालूम है वो नीडी है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल थिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज दैट पेशेंट. जैसे आई गो विद एन एनजीओ where there are 180 senior citizens, I don't charge over there because I know that it is an NGO. Can you hear me? Hello? Yes. Yes, ma'am. Yes. So I don't charge over there.
How can I charge over there? Because I have decided to give that services over there. So that understanding, that faith needs to be there. अभी जैसे मेरे जितने भी 4-5 को मैंने कोहर थेरेपी में डाला है, एक को ही खाली, अभी 2 जनों को ही खाली मैंने सप्लीमेंट्स में डाला है, तो बट दोनों से मैंने काउंसलिंग, एक तो मेरी है, सेकंड मेरी क्लोज फ्रेंड है प्रिया करके. I have not charged her at all any counseling fees or consulting fees. Because that is a relationship. I know them. See, mere jo known people hai, are not known now. They have been knowing me since past 30 years, 40 years. It's such a long relation I have with them. Some of them, though, I know them since past 8 years. They just called me since then. चाहे कैसे भी करके, किसी भी problems के time, solutions के time, I'm there with them. वैसे करके मेरे पास नहीं करके करीब 1500 के 2000 लोग हैं जिनको मैं नहीं चार्ज करती हूँ. कुछ भी होएगा. अगर उसके थ्रू कोई आता है जिनको लगता है नहीं इनको जरूरी है एंड वी डोंट नीड टू, सो आई डोंट चार्ज. तो इसके लिए जो मेरे को भेजता है ना, आई आस्क देम व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट पर्सन. अभी जैसे आई नो पर्सन हैविंग अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड, ऑटिज्म चाइल्ड, I know their parents are anyway being squeezed by the industry itself. Therapist में pay करना, हर एक therapy लेना, it's not so cheap. If I talk about the remedial teachers itself, they charge from 500 to 1500 depending upon area to wise, and that too depending on the child's condition, whether it's a learning disability, slow learner, mentally retarded, cerebral palsy, autism child or Down syndrome, any disability child per se. So per session भी अगर कोई उनसे 1000 लेता है, 3000 तो उनका वैसे ही जाता है पर वीक. प्लस उनको कोई और थेरेपी लगती होगी, वो मुझे वो पेशेंट्स मालूम है ना. वैसे फॉर देम आई नेवर चार्ज, चाहे वो रेफरेंस के थ्रू हो, चाहे वो नॉन रेफरेंस के थ्रू हो. वे बिकॉज आई नो पेरेंट्स आर एनीवे ब्लीडिंग देयर. जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो आपके पास आवे इकोनॉमिकली रिच होवे या इकोनॉमिकली मिडिल क्लास होवे, जरूरी नहीं है. समवेयर यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो, जहाँ पे ह्यूमैनिटी जरूरी है. बाकी आपका प्रोफेशन है, आप डाइटिशियन हो, आप न्यूट्रिशन हो, चाहे आप नेचुरोपैथ हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हो जहाँ पे आप पेशेंट से चार्ज करते हो, गो, दैट इज योर चॉइस. That even I do it when I know कि he's just come for me for a career counseling one time. I do charge. Where institute I know where they don't have students, they call me for counseling. Obviously जहाँ पे institute के पास बच्चे नहीं है, वो उससे चार्ज लेके मैं करूँगी क्या 1000 रुपया या 2000 रुपया. So I don't charge. I know today education industry is in worst of scenario. Especially the institute owners. The niche market is so bad. So I should never charge them counseling, career counseling, when they used to call 100 students का batch also. Let them earn, क्योंकि उनका material cost होता है, उनका administrative cost होता है, उनके counselors होते हैं खुद के, उनके faculties होते हैं उनके. So it is up to you. It's a humanity. You know, it's a humanity. What do you want to give back to the society? Okay, so let's come with the 8th. Anything till now 7th point तक किसी को समझना है, किसी को अभी तक understanding नहीं है. So come to 8th point, that is help desk executive. Here we have 24/7 treatment for the patient. ये services हमारे लिए 24/7 है. मतलब आप अभी कोई काउंसलिंग कर रहे हो, आपके पास कोई पेशेंट का कॉल आता है जिसको आपको मालूम है कि मेरे पास 10 पेशेंट है दिन में और मेरी कैपेसिटी 10 की ट्रीटमेंट है. आप वो पेशेंट को अगर मेरे पास रेफर करते हो तो आपको वो अमाउंट शेयर होके आएगा ही आएगा, क्योंकि व्हाट आई विल चार्ज आई विल बी पेइंग यू, और व्हाट यू आर गोइंग टू अदर थेरेपिस्ट इवन दे विल पे यू.
बट जो सप्लीमेंट होगी वो आपके अंडर ही जाएगी। वैसे ही हमारा हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क क्या करेगा, उसको कंसल्टिंग देगा, उसको जो भी वो कंसल्टिंग देगा दैट विल बी शेयर्ड विथ यू अप टू 50%। सपोर्ट कौन दे रहा है? बिकॉज इट इज अ बैक सपोर्ट ऑफ द कंपनी, इट इज एन ऑनलाइन सपोर्ट, इट इज 24/7। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, पेशेंट कैन बी इन टच विथ द हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव एनी फॉर 24/7। जो कंसल्टिंग वो हेल्प डेस्क वाले चार्ज करेंगे दैट विल बी शेयर्ड विथ यू अप टू 50%। प्लस उसके सप्लीमेंट्स जाएंगे। पेशेंट बोलेगा तो सही ना, मैंने निष्ठा मैम बोलेगी मैं निष्ठा मैम हूँ और मेरे को रिफर सोना मैम ने किया है, आई एम अंडर हर, वो अपना आईडी देगी, supplements will go through her ID, so there also she will earn a profit of 11 to 60%। प्लस जो आपका पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, MFA पॉइंट्स जो हमारे कलेक्ट होते हैं, on that also 3 to 30% you get a profit, 5 to 30%। I gave you yesterday an example, अगर समझो मेरा MFA पॉइंट 6000 हुआ है पॉइंट्स में, जो हम PV बोलते हैं या टोटल PV TPV, तो टोटल PV अगर मेरा 6000 हुआ है, उसका 5% to 10% will be coming to me into my account besides getting the distributor profit price। बिकॉज जो आप पेशेंट को बिल करोगे MRP पे बिल करोगे, बट वो भी रिलेशन आपका है। We are not going to tell you to build him at MRP price. It is up to you. How do you want to build your patient, knowing his or her condition? Then comes 9. It is paramedical staff services. जैसे हमारा प्रोंटो खाली बॉम्बे में अभी सर्विसेज अवेलेबल है, राइट? तो यहाँ पे जो हम पैरामेडिकल, जैसे हमने बोला आपको घर पे नर्स चाहिए, केयर टेकर चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, प्रोंटो वो सब करता है, हम आपको सर्विसेज देते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट आता है 10 to 20% ऑफ पैरामेडिकल सर्विस फीस इज बीन शेयर्ड विथ यू। जैसे काउंसलर है, आप किसी की फुल काउंसलिंग लेते हो, वो 20% आपको शेयर करता है या 50% शेयर करता है, वो एक आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर सुप्रिया चार्जेस 10,000 per patient. I'm just giving an example, so don't take it personally. Okay, when if in case Dr. Supriya is charging 10,000 per patient for a counseling and she says me, madam आप इनसे 10,000 charge करना, आप counsel करना और आप मेरे को 50% देना, I will say okay. It is a mutual understanding, mutual relation what you have. I can give her, then even if I am disagreeing it, I will tell her I will give you 20%, is it okay with you? And if she says no, then I have to come somewhere in between. अभी जैसे सोना मैम है, सोना मैम के जो निष्ठा मैम है या नीलम मैम है, इफ इन केस दे से मैडम आप ये काउंसिल करो ना हमारे पेशेंट को, so she will be also based on her condition, she will be doing it. So it is individual to individual. जैसे डॉक्टर उमेश है, he is coming through डॉक्टर आफरीन, that relation। प्लस अगर समझो आप बोलते हो मैं सोना मैडम के अंडर हूं, मगर आपको काउंसलिंग अपने पेशेंट को आफरीन मैम से करवानी है या मेरे से करवानी है या किसी और से करवानी है, यू आर फ्री टू डू, बट इतना याद रखना जो प्रोडक्ट जाएंगे आपके आईडी के थ्रू जाएंगे, समवेयर दैट बेनिफिट is going to go to Sona madam also for supplements. Could be not for counseling, could be not for consulting because you are not taking her help. But for supplements, yes, जो आपके buddies हैं, some part of share goes to them. Then comes online lead generation. Online lead generation, अभी काफी जन जो होते हैं, they come through Facebook, they come through incoming calls to us to inquire about the core therapy, जहाँ पे हम उनको involve करते हैं at the call of 12 to 1 o'clock. They want to get associated with us.
either in the form of a partner, either in the form of a treating them. So it is 100% yours. Because वो जो supplement लेगा आपका partner बन के, it will be benefited to you. If it is a patient, so patient का 100% counseling consulting आपके पास आता है, प्लस जो supplement जाती है वो भी आपकी जाती है. 2 to 3 का जो हमारा कॉल होता है, many times we discuss even on these points on online lead generation. We discuss even on affiliated partners. If in case you're not able to get a partner through online lead, we show you how it is to be connected. So affiliated partner में क्या होता है, अभी एक भैया हमारा एक एग्जांपल देते हैं. I don't recollect the name of that person. He only goes on making people join under him. कोई काउंसलिंग के लिए आता है उसके पास पेशेंट, तो वो किसी को रिफर करता है, तो वो जो पेशेंट किसी को रिफर करता है उसको वो चार्जेस देता है, तो उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे जाता है, इंक्लूडिंग ऑफ पार्टनर्स मोर. और जो आज के एमएफए की जो उनके रिवॉर्ड्स अवार्ड्स में जाते हैं, ही इज गेटिंग मर्सिडीज थर्ड टाइम, सेकेंड और थर्ड टाइम, जबकि वो खाली वेजिटेबल वेंडर सेलर है. आई डोंट नो द नेम, बिकॉज ही इज जस्ट डूइंग इंक्लूडिंग पार्टनर्स आफ्टर पार्टनर्स. उसकी काउंसलिंग किसी और से करवाता है, कंसल्टिंग उनको पूछता है, तो जो काउंसलिंग के चार्जेस है वो शेयर हो जाते हैं. उसने अपने पैरामीटर्स रेडी रखे हैं. सप्लीमेंट्स जाती है वो पेशेंट उसका है, तो उसको वो उसके थ्रू जाता ही जाता है. सो ही इज अर्निंग इन काउंसलिंग, ही इज अर्निंग इन कंसल्टिंग, ही इज अर्निंग इन सप्लीमेंट्स, प्लस वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है. जरूरी नहीं हो हर एक पेशेंट आपका सप्लीमेंट लेवे. वी डोंट इंसिस्ट ऑन सप्लीमेंट्स. तो एटलीस्ट वो काउंसलिंग भी लेता है किसी पेशेंट की, या कंसल्टिंग भी करता है फिटनेस पिलर्स के बेस पे, स्टिल ही इज अर्निंग ऑन दैट. Is it clear on this? Yeah. The supplements anyway, what I've been telling, 11 to 60% you get the profit on that, plus rewards and all that. Then comes, we have got our own pathologies. जैसे कल किसी ने मेरे को पूछा था जीएसके वेलनेस का किधर और भी है क्या. We have centers across India, we have across globally also, जहाँ पे हम रेफरेंसेस पेशेंट्स को भेजते हैं, आपके पेशेंट्स को, वहां पे जो भी पैथ टेस्ट उनकी होती है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वो आपका पेशेंट है, तो आपको वो पेशेंट को ट्रीट करने में हम लो कॉस्ट चार्ज करते हैं. प्लस आपको जो बेनिफिट मिलता है, यू गेट अप टू 25% ऑफ द प्रॉफिट ऑन दैट टू इफ अ पर्सन गेट्स द टेस्ट डन थ्रू देम, otherwise no, through our own path wherever we have got the references. एक डॉक्टर है, बोलता है ना आप ये सबर्बन डायग्नोस्टिक में ही जाओ, या ये पीएच हेल्थ केयर में ही जाओ चेक करने के लिए, या यही एनएम मेडिकल के पास जाओ. क्यों? बिकॉज दे हैव गॉट देयर टाई अप्स विद देम where they are being shared a profit of 40%. Whereas when you get the test done through ThyroCare, or when you get the test done via medical this wellness, they will never ask you even sometimes कि आपको किसी डॉक्टर ने रेफर किया है क्या, because they don't share over there the profits. That is the reason compared to the normal test via Suburbans or NM or your nearby pathologies, unka report are more expensive compared to theirs, whether it is wellness or it is ThyroCare. Has the profit has not been shared, even I should not be saying it in an open, but the recommendation of the doctors also becomes less. So here we share the services with you. We give you 25% profit directly. Then comes home support executive, home support services. Home support services में क्या होता है? Pronto plays a crucial role over here. Because here we give you expert at your convenience for treating your patient at home.
जो पेशेंट आपके सेंटर पे नहीं आ सकता है या आपके वहां तक नहीं आता है, तो उसको सर्विसेज हम घर पे यहाँ पे देते हैं। जो प्रॉफिट होता है, जो सप्लीमेंट जाती है, ऑल थ्रू दे आर अप टू योर आईडी, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ एक्सपर्ट they charge and then they share with you. Then we have got freedom package booking centers. We have got lot of freedom packages in our own cohort therapy itself. उसको क्या कर सकते हो, आप अपना सेंटर करके खोल सकते हो, जैसे डायबिटिक का है हमारा पैकेज है, so you can make it as your booking center, ना, say for diabetic curing and all that. यहाँ पे क्या होगा, you will be known as a one specialist over there. तो प्रॉफिट जो सप्लीमेंट जाएगा, it will be your profit. Then we have got vein therapies, because see, vein therapies, if I go as per the allopathy, there are a lot of various ways of doing vein therapy. If in case it's with varicose veins, they just inject and they do so. But what we do in our vein therapy is, we just put in, you know, the machine where it gives the pumping to your body. If in case somebody has seen of Saul, Dr. Bimal Chhajjar, डॉक्टर बिमल छज्जर क्या करता है, वो ईसीजी मशीन पे डाल के वो पेशेंट को ट्रीट करके आईवी डालता है, एंड आई हैव डन फॉर माय डैड एंड इट इज प्रूवन टू बी सक्सेसफुल विद हिम. They just pump in, they just release the blockage from there. So हमारी vein therapy भी वही होती है. What we do, we just put in a machine, we give the pumping and we release the blockage of that area. Plus we give, अगर कोई need है, जैसे कैंसर पेशेंट को है, कैंसर पेशेंट, सिस्ट पेशेंट, you know, with a heavy kidney stone patient, we ask them to take vein therapy along with us. But after some time, seeing their progresses, जैसे my mom, we have started with her with a vein therapy since 2 days prior. तो vein therapy करते क्यों हैं? Because there is a blockage of veins. To relieve that pain, to relieve that irritation and swelling. और जो सिस्ट वाले पेशेंट होते हैं, ओवेरियन सिस्ट बोलो, तो उनको ऑटोमेटिकली वो स्वेलिंग आती ही है टांगों में, क्योंकि वो रिट्रेन नहीं कर पाता है, टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल सकता है 100%. अगर मैं एलोपैथी के पास जाती हूँ, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेन थेरेपी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन दे डू. जैसे स्कैलेरोथेरेपी है, जहाँ पे सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली थ्रू वेन्स के अंदर, और ये ट्रीटमेंट 4 से 6 हफ्ते की होती है. बट हम क्या करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, हम मशीन आके लगा के वी पुट द, यू नो, द मशीनरी, हाउ द ईसीजी इज डन, सेम वे वी पुट इट the bells around your body and we give the treatment therapy. So that the pumping of the blood, it happens fully and the veins gets released. Then we have got donations. जैसे Hello, हमने ma'am. आप, yes, बोलो ना. ये वेन थेरेपी में जो solution है, what is the solution like we use? See, we don't use any solution when we give vein therapy, but yes, certain types of specific kara they ask us to drink. जैसे अभी my mom को एक तो उन्होंने फूल का कोई कारा दे रहे हैं, you know, No, ma'am, flower this is seeds का. Ayurvedic or allopathy that the solutions you use? नहीं, it is Ayurvedic. The Acha. solutions are purely Ayurvedic. That is what I'm telling. So one solution they have given is of flower seeds. Okay. Acha. Second solution what they have given, it has got jeera, it has got coriander leaves and all that. There are Okay. combinations of 5 mixtures. Okay. Depending on the type of diseases, accordingly they give the karas also.
Okay, so can you name few elements in where it is used, this veins See, I therapy? told you, it is used in cyst, ovarian cyst, where there's a bulky uterus के लिए भी हम use कर सकते हैं to reduce the अच्छा. size, to shrink it out. Prostate enlargement होता है, जहाँ पे urine blockages होते हैं, तो उनके लिए So भी वो help करता है. at a time, Cancer. how much ml is infused, that solution at a time? See, that ml of infusion is not infused that time. You know, after the therapy, they give depending on the critical. अभी जैसे मम्मी को हम लोग हर 12 बजे morning 8 o'clock, then afternoon 12 o'clock, 4 in the evening, and again 8 in the evening we give her that liquid. Okay? Okay. So that is 800 ml. अच्छा. So it will vary from patient to patient. जैसे आप डॉक्टर छज्जर के पास जाते हो जो नेचुरली क्योर करता है आपका बाईपास, ओके, जो आपका ब्लॉकेजेस क्योर करता है. व्हाट ही डज, इवन ही पंप्स इन फर्स्ट योर बॉडी वाया ईसीजी मशीन, ओके, ताकि आपके ब्लॉकेजेस क्योर हो गए. उसके बाद आपको वो आईवी चढ़ाता है. दैट आईवी इज ऑफ 200 ml. सो द रिकमेंडेशन इज 200 ml पर डे उनके ट्रीटमेंट में. Okay, plus he gives you the medicine, and that is also natural cure of blockages. अभी जैसे डॉक्टर आपटे है, डॉक्टर विनायक है, who's in Chembur, डॉक्टर आपटे is in Sholapur. He also does it, but he doesn't does the pumping. He doesn't releases your veins. He only gives you the IV. That is of this mineral water, concentrated mineral. Yes. Okay. So concentrated mineral जब भी आप CMD देते हो तो CMD इसके लिए वो important role करता है ना हमारे लिए, क्योंकि जो cells आपके observe नहीं करते हैं nutrients को, तो वहां पे कहीं ना कहीं कंसर्न आ रहा है, तो ही वो ब्लॉकेज हो रहा है ना. जो आपका CMD देगा ऑटोमेटिकली स्लोली टाइम लेगा. इसके लिए हमने क्यों बोला है टाइम ड्यूरेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर. ओके, now let what us is the costing of this vein therapy per day or per see setting? per session. Now he's charging us 1200. May he charge somebody else different? I don't know. Acha. Because Dr. Chhajar charges 2000 for heart. 2000 for that and 1500 for IV. Okay. Whereas Dr. Vinayak, who gives, he gives only IV for 2000. Dr. Apte gives it for 1200. Okay. So, Yeah, so it it varies. requires a hospital setup or it can be done at home also, this therapy? Home only. We are doing my mom's treatment home only. Acha, acha. Okay. We are not taking her to the hospital. Okay, okay. Even to my dad, we used to just take him for 4 hours at Dr. Bimal Chhajar's clinic and get him back every day. Acha. Because he does it through ECG machine, na? Mm-hmm. Because he is specializing only for heart patient. That is the reason. Mm-hmm. Yeah. Okay, thanks. Okay, yeah. So otherwise, if you go to allopathy में there are different types of vein therapies. Na? That is what I told. They have laser therapy. Laser therapy में क्या करते हैं? आपको usage of needles ही करते हैं ना, through high intensity light. लेजर के थ्रू स्टोन ब्रेकिंग होता है, तो लेजर के थ्रू वेन में भी तो वो करते ही है ना. Yes. So what do they do? Closes off the veins without the usage of needles with high intensity light. Endoscopy क्या है? Endoscopy vein surgery. What is in your term in a medical language? It's a small camera only, na, through which दूरबीन के through खोलते हैं, and they through tiny tube they put a surgical equipment inside, right? To close that vein. Endoscopy is done even for liver cirrhosis patient. It is not done only for vein therapy, only done for people who has a varicose veins. No? So it is used in a different variations. No? Okay. Yes. So that way, then we have got medical tourism. We have got donation. Donation may we help you via direct crowdfunding, where you earn 20% over here, depending upon the patient का जो amount है वो सब है यहाँ पे भी. But you earn, we do it via Millap. Millap and GSK is in touch together. Oh, sorry, Arrow Humanity. Okay, then medical tourism is there.
Then Mediclaim and cashless services also we provide, we help you all for. In this, we have not taken still in depth. We have not gone with these 3 services more in depth. Okay. Then somebody, he wants to be a distributor and holding, where he can be a 50% share in profit, consulting and counseling of the distributor. क्योंकि जो सप्लीमेंट जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी के थ्रू जाएगा ना, आप खाली कंसल्टिंग और काउंसलिंग के उसके 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट बनते हो. डोनेशन कोऑर्डिनेटर, आप 50% शेयर इन प्रॉफिट, कंसल्टिंग एंड काउंसलिंग. कोई पार्टनर ऑफिस खोलता है कंसल्टिंग काउंसलिंग के लिए, सो देयर वेरीज, दो वी हैव पुट इट के कंसल्टिंग फीस 20% of what patient gets to the distributor and partner. Our counseling fees 20%. This all will vary, permutation, combination, सब आपके ऊपर है. We don't tell you. Though we have given you certain guidelines for what should be the counseling fees. But अगर समझो वो आपके एरिया में नहीं है, उतना नहीं मिल रहा है, तो how can I be telling you to charge that much only? I cannot ask you, right? Any understanding over here? Any questions over here? Because tomorrow Geeta ma'am will be taking the last lecture and then I will be winding up tomorrow. If in case tomorrow you all don't mind, joining earlier, where we can take a session of from 10 to 10, 11:40, 11:50, so that you all understand more in depth. Because as it is tomorrow the last session, that's the reason. Or you want 10:40 to 11:40, I'm okay with that also. Ma'am, we can start at 10. Whoever wants as and when can join, na? Yeah. So we can start at 10. I am okay. What about others? I need to know from the participants. That's Yeah, what I said. Whoever I'm wants. okay. I'm okay with 10. Hello. Yeah, Narendra. Yes, we'll do. No problem. Yeah, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Yeah. Okay, ma'am. Okay, done. So tomorrow we will take a session at 10 o'clock, okay, where I will take it from 10 to 11. Sort out all your queries, go through the entire cohort therapy. At 11, I'll ask Geeta ma'am to join in. Is that okay? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Wish you all the best. May God bless you. Take care. Thank you. Thank you. And कोहर हेल्थ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।